So Miss Uzma is okay. Yes, Miss Uzma, please do unmute yourself. Yes, sir. Welcome back, Miss Uzma. Let me share the Thank screen with you. you so that you may be able to see whatever is going on. Okay, so Miss Uzma, you were talking about the favors to arm because you have mentioned Ernest Hemingway is your favorite writer. Yes, So, sir. what is the significance of the title of the farewell to arms? Sir, A Farewell to Arms was written after First World War, and after First World War, it was in 1921, I think, not 1921, and A Farewell to Arms. Um, During that war time, Hemingway got injured and he was in love with some nurse, but that nurse left him. But that nurse left him, and he just wanted to leave everything leave everything which had wrong impact on him. Okay, all right. You have used some nurse, and I just want to understand the difference between what is the difference between some nurse and a nurse? When we use some and when we use Uh, with a nurse or with anybody. Sorry, sir. 1 minute. A nurse mean one nurse, and some nurse meant I meant by Mhm. it is for quantity, I think. I'm So not you're talking about the quantity of the nurses, like with whom the Hemingway worked. I use this word wrong with a Okay. nurse, in love with the nurse. So, Sorry. Hemingway married for 4 times. Yes, sir. Maybe you're talking about that particular incident. So you have used some nurses. So do you know the names of the wives of Hemingway? Yes, sir. Mm-hmm. Yeah. First one was Hadley Richardson. Second one was Pauline, and third one was Martha, and I don't remember the last one's name. Mm-hmm. Hadley Richardson was, I think, the first one. So Pauline Yes, sir. Pfeiffer was second, Martha, and Mary Wellish Hemingway was the last. So Yes, sir. uh, why Hemingway, shoot himself? What was the reason of that particular suicide case? Uh, what I read today, he shot himself because he could not find. He thought himself useless in the society because most of the people asked him to leave writing, and he was not willing to leave this because this was leaving writing was his because writing was his life, and to leave it to meant meant for him to die. So he wanted to leave. He did not want to leave, and he thought that he thought he had nobody in his life. He has had nothing in his life, so he shot himself. Okay, well, Hemingway was suffering from a serious disease. What was the name of that disease? Once he suffered from jaundice. Hmm. All right. But the disease that even claimed his life. Yes, because of overdrinking. Okay, all right. So, Ernest Hemingway wrote and won Nobel Prize. So, in which year he won the Nobel Prize? He won Nobel Prize in 1954. Okay. By the way, what do you mean by Nobel Prize? When the very series of Nobel Prizes for the very first time, when Nobel Prize ceremony was held, and who is basically Nobel? Do you know the detail, the history of Nobel Prize? So I don't know the history, but first Nobel Prize was announced in 1907, I think. 1907.
7. No, it was Before not in 1907. before Nobel Prize, there were poet laureates. Ben Jonson was the first poet laureate. All right. But both are the different things, huh? Poet laureateship is Yes, sir. another thing, and Yes, the sir. Nobel Prize is another thing. By the Yes, sir. way, who is poet laureate? Who is the poet laureate? What do you mean by poet laureate? When we say poet laureate, so who is poet laureate of England nowadays? Who is poet laureate of? England, like right now, who is the poet laureate? Mm, Poet laureate, I think, is a poet who writes for the royal family All right. So do you know name of any three poet laureates of England? of England. Yeah, Mm, because even United States they have their different poet laureates. So name out any three poet laureate because we're talking about English literature mainly from America or sorry from England. So I want to have just three names from England, the poet laureates from England. uh, One was Ben Jonson, and No, Ben Jonson was not the official poet laureate. He was not. sir, I have no idea. Okay, do you know about William Wordsworth? Do you feel William Wordsworth was poet laureate? Yes, sir. William Wordsworth. Yes, sir. Well, it's easy to remember Robert Southey from 1830 to 43, William Wordsworth 1843 to 50, Lord Alfred Einstein 1850 to 92, Alfred Austin 1896 to 1913, Robert Bridges 1930 to 30, John Masefield, Cecil D. Davis, Sir John Bettijman, Ted Hughes, Andrew Yu, and Sir, nowadays Simon Armitage is the poet laureate of England. sir, So due to that's very this easy. interview, everything has flown. Okay, no worries. Just feel yourself relaxed. Last two questions, and then we are going to end up the session, Ms. Usman. That Yes, is sir. about your you're already serving as an SSE. Yes, That sir. means SSE means you are mashallah earning somewhere around 70 plus nowadays after this budget. So Yes, why sir. we should not consider an unemployed aspirant, that person who is without any job, why an already person who is on job and having mashallah handsome salary, why we should prefer you? Why we should skip the person who is without any job? You are mashallah settled there. No, sir. I it's my dream to have a job with 17 scale. I worked hard for this scale for this to have this skill for almost 7 to 8 years. I read everything which I didn't read in my masters. I just wanted to have skill, not salary, because I already have that much salary, which the higher education department is offering. Well, you are skill oriented, you have mentioned. So don't you Yes, feel sir. that teaching, if you're skill oriented, I'm sure that the other departments like police department, the customs department, they're offering 1 lakh plus packages to the those people who are serving in BPS 17. So you have mentioned scale. So teaching is something that is not scale oriented. It's something that is services oriented. Do you feel a person who is scale oriented, who just wants to join higher education department because of scale, is going to be a benefit, is going to be a fruit for this department? So it means you do not want any change in higher education department after joining the department. You are just scale oriented, and that is the reason you've been working for 7 years. Okay, all right, Ms. Usma, I think if you want, we can skip this question as well. Ms. Usma's mic is perhaps not. Okay, I have unmuted you, Ms. Usma, once again.
Yes, sir. So you want to go with the answer, or you want to skip the question? No, I just want to understand what you actually want to ask. My question is, You want to ask look, that okay, will I be beneficial for the department or not if I am scale yeah, oriented? how a scale-oriented person can be beneficial for the department, for the higher education department. That is my question. Sir, most of the people want grade 16. They want scale, but they are beneficial for the department. I want 17, then I will also be beneficial for the department. Second thing, one thing more, I am already serving in this department, school education department, to the government school children. So I have experience of teaching the students who comes from lower families. uh, I have experience from, I have already this experience. So the higher education department, so it is benefit for the higher education department that they have recruit a person who already have experience. The one who has no experience with this, you have written non-convincing. Yeah, so no, it's not about this argument. It's about your previous argument. It's not about this one. Okay. Uh, um, the one who the person who has no experience with teaching the students from this background, they will take 2 to 3 years to understand the psyche of the children, students who have who comes from the lower background. So I think I am already experienced. 1 minute. Okay, all right. So thank you so अम्मी के much. पास ले जाओ. That's end of your formal interview, Miss Usma. Thank you so much. I think आपके इंटरव्यू के एंडिंग के साथ ही जो है वो someone is there who was waiting for your interview as well. Miss Usma, there was some noise in your background, so आपका mic थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया गया ताकि आप उन्हें attend कर लें. Meanwhile, if you feel it convenient कि अगर आप noise नहीं है तो आपका mic दोबारा से हम open कर रहे हैं. आप इसे ओपन कर सकते हैं. अगर हो तो आप इसे रहने दीजिएगा. आप चैट बॉक्स में अपनी भी लिख सकते हैं. Okay, talking about from the very beginning of the interview, Ms. Uzma, my daughter is okay. Diabetes, diabetes. Okay, from the very let me हम अच्छी बातों पे पहले बात कर लें, मिस उज़मा, या जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है हम वहाँ पे पहले चले जाएं. You may mention it in the chat box ताकि हम जो हैं उस पे पहले चले जाएं. चलें, अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम बाय डिफॉल्ट ही इस पे कमेंट्स दे देंगे. ओके, अच्छा मिस उज़मा, आपका इंटरव्यू जो है एक डिटेल्ड इंटरव्यू था. हमें बड़ा गहराई में समझने को मौका मिला आपकी पर्सनालिटी को. थैंक यू सो मच. इसमें शुरू से हमें एक ऐसा इमेज मिला कि जिसमें एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट में अच्छी रीजन थी कि आपको एजुकेशन में कंटिन्यू जो है वो नहीं करना चाह रहे थे, या आपके फादर की तरफ से नहीं था, लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि आपको फिर भी आपने जो है वो छोड़ा नहीं, आपने इसको मूव ऑन किया. लेकिन इसके साथ जो है ऐसे वर्ड्स को यूज करना जो कि आपको प्रॉब्लम में लेके जा सके वो बहुत ज्यादा था. जिसमें से इम्प्रेशन और इम्पैक्ट एक बहुत मशहूर जो है वो एक हमारे पास क्वेश्चन भी है, और द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. और एक इंग्लिश के स्टूडेंट से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो इनको समझते होंगे. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को खुद ही यूज करना शायद हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं दे सकेगा, और हमें इन वर्ड्स को स्ट्रिक्टली अवॉइड करने की जरूरत होगी अपने रियल इंटरव्यू में. हॉबीज की तरफ बात करते हुए ऐसा नहीं हो सकता कि एक हाउसवाइफ हैं उन्हें हॉबीज के लिए टाइम नहीं मिलता होगा. लम्हे भर के लिए मान भी लीजिए, लेकिन मेरा ख्याल है फिर भी हॉबी से मुराद ये है कि जो आप पसंद करते हो. ठीक है, और लाइफ कभी ना कभी हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, या साल में एक दिन, या 10 सालों में एक दिन ऐसा जरूर टाइम मिल जाता है जिसमें आप अपनी मर्जी का कुछ करना चाहते हो. तो बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस हो तो शायद ऐसा ना हो, वो स्किप कर देंगे कि नहीं जी मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलता, तो आप अपने लिए मुश्किल खड़ी करेंगे यहाँ पे
क्योंकि आप जो हैं वो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी हॉबी से मुतल्लिका हैं, कम से कम इंटरव्यू का 2 से 3 मिनट ले सकते हैं, आप उन्हें स्किप कर रहे हो। और आप एक अच्छा एक्टिव हॉबी जो है अगर नहीं बता रहे हो, दैट मीन्स कि आपका इंटरव्यू सारे के सारे रैंडमली मूव होगा और वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए नए होंगे। तो माय रिकमेंडेशन है इस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हॉबी को एक्टिवली चूज करें, और एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जो आपको इंटरव्यू को लीड करे। आपको पता चले कि नेक्स्ट में मेरे पास इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो आएंगे, और इसी से चीजें चलती 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 जो है वो इख्तिताम पर पहुंचे। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी पर्सन को, मिसाल के तौर पर मेरे ख्याल में एक क्लेवर हॉबी ये है, एक ऐसा पर्सन जिसने अपने इंटरव्यू को अच्छे से प्लान किया हुआ है, ढंग से उसको तरतीब दिया हुआ है, मेरे ख्याल में उसको ये चाहिए कि वो ये बताए कि माय हॉबी इज आई यूज्ड टू रीड द नॉवेल्स ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे इन माय लीजर टाइम। वो भी उसकी हॉबी नहीं है। दैट मीन्स कि उसने, उससे किसी ने पूछा भी नहीं कि आपका फेवरेट जॉनरा कौन सा है, उसने बता दिया नॉवल है। उसे किसी ने पूछा भी नहीं कि आपका फेवरेट राइटर कौन सा है, उसने बता दिया मेरा फेवरेट राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे है। उसे किसी ने पूछा भी नहीं आपकी फेवरेट एज कौन सी है, लेकिन वो इसी क्वेश्चन से अपने इंटरव्यू को अपनी डायमेंशन में खींच के ले आया कि चलें अब हो ना हो अर्नेस्ट हेमिंग्वे से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। बहुत कम चांसेस हैं कि वो आप बताएं कि मैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पढ़ रहा हूँ, वो यही ना पूछेंगे अच्छा कौन सा नॉवल है, कौन सी चीजें हैं। आई एम श्योर कि कितने लोग ऐसे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट आई वांटेड द मोमेंट अगो। तो मैं ये चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ आ गया है। यू आर जस्ट सपोज्ड टू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ये यहाँ तक ये बात समझ में आई, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको ट्रिक शेयर की है। तो कितने लोगों को समझ में आ गया? गुड। सो अगर आप हॉबी को स्किप कर देते हो तो यहाँ से यू आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो इसको नहीं करोगे, हॉबी में लेके जाएं, लेकिन एक्सेसिव वर्ड्स का यूज नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा वर्बोसिटी से बचिएगा, अच्छे अल्फाज को जरूर इस्तेमाल करें, क्वेश्चन को इंतहाई केयरफुली सुने, और उनका जितना मुनासिब आंसर हो सकता है उतना ही दें। जितना ज्यादा लंबी डिटेल में चले जाएंगे, आप अपने लिए क्वेश्चंस पैदा करते चले जाएंगे। सेकेंड थिंग इज, यू आर माशाल्लाह वर्किंग लेडी। आपको लेडी और एसएसई में, सॉरी वुमेन में जो फर्क पूछा, हम भी स्किप कर जाते हैं बहुत सी चीजें, हम सभी इंसान हैं, निकल जाती हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और ये आपसे मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने, अगर आपको लगता है कि आप इनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकेंगे तो ऐसे वर्ड्स को यूज ना कीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड पैनल में से किसी ने नहीं पूछना, ये आपने उनको देना है कि लेडी। जब आप लेडी की बात करेंगे डेफिनेटली अगला क्वेश्चन यही आएगा कि ऐसा लेडी जो है उनमें क्या फर्क है, वुमेन के अंदर क्या फर्क होता है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो आपको कुछ दूसरी तरफ ले जाएंगे जहां पे हम नहीं जाना चाहता। Overall, your exposure about your job was good, you know, about SSC and all the things. लेकिन एक shallow knowledge है यहाँ पे हमारे पास। शायद हमें ज्यादा देखने की जरूरत है कि 6 अप्रैल 2022 को डॉन ने क्या रिपोर्ट किया था, और ऐसी रिपोर्ट्स जो खुसूसन आपके डिपार्टमेंट से हों, बाजुकात जो है कोशिश करें कि इनको थोड़ा सा टाइम दे के पढ़ लिया करें, ये अच्छा होता है, बेनिफिट देता है, और अच्छा इंप्रेशन जो है वो चला जाता है। एक और क्वेश्चन मेरा है आपसे, वो ये था कि सम और ए का मतलब जो है, इसमें जरूर डिफरेंस देखिएगा। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं कि नर्सेज जो हैं वो क्या थी। अच्छी चीज ये थी कि आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो पता थी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की वाइफ का जो है वो नाम था। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज थी इंटरव्यू में वो यहाँ पे थी, स्केल ओरिएंटेशन जो है। याद रखिएगा, इफ समवन इज आस्किंग यू कि आप ऑलरेडी जॉब पे हैं, आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है, इसका मेरे ख्याल में एक अच्छा रिस्पॉन्स, एक अच्छा आंसर ये हो सकता है कि सर मैं ऑलरेडी आई एम सर्विंग एंड दैट इज द रीजन कि मैंने डिपार्टमेंट को, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतना अरसा सर्व करने के बाद ये महसूस किया है, और मैं इस चीज के लिए बड़ी पैशनेट हूँ कि मैं क्यों ना हायर लेवल पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का पार्ट बन के भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी बच्चों को वो चीजें सिखा सकूं। मुझे लगता है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी उन लोगों की कमी है जो कि जिसकी वजह से हमारे वतन अजीज का नाम उस तरह से रोशन नहीं हो रहा, हम उतने साइंटिस्ट पैदा नहीं कर रहे, हमारे पास लिटरेचर में नोबेल लॉरेट आज तक एक भी पैदा नहीं हो सका, हमारे पास कुछ ऐसे राइटर्स आज तक नहीं आ सके जो अच्छे से लिख सके, जो इमेजिनेशन को इंकैप्सुलेट कर सके, जो जब लिखें तो पता चले कि इन्होंने बड़े ढंग से लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। तो मेरे ख्याल के अंदर मैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो तमाम चीजें जो मैं समझना चाहती थी, वो कि मैं उतनी तब्दीली नहीं ला सकी, लेकिन शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाए जाते।
तो मैंने उतना जरूर किया, लेकिन मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए पैशनेट हूँ। और एक ऐसा टीचर, एक ऐसा पर्सन जिसने ऑलरेडी आई एम सॉरी, जिसने ऑलरेडी जो है एक डिपार्टमेंट को सर्व किया है, वो डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन से जो कि बिल्कुल ही अभी नया हो, जो कि अभी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहा है, उनसे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और मैं डिपार्टमेंट के अंदर ये वाली चीजें जो है वो तब्दीली ला सकती हूँ। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको बेनिफिट देंगे। आपका माइक ओपन है मिस सुषमा, आई एम श्योर कि आपने अब इन तमाम चीजों को यस समझ लिया होगा। ठीक है, यस लास्ट सर। में एक कमेंट जो है हम आपसे भी जरूर दोबारा पूछेंगे अगर कोई क्वेश्चन होगा। इमोटिव आंसर नहीं दीजिएगा। हम सभी कहीं ना कहीं ये चाह रहे होते हैं कि सैलरीज अच्छी हों, हम सभी स्केल्स के पीछे भाग रहे होते हैं, बट वहां पे हमें थोड़ी देर के लिए इन चीजों को नहीं बताना है। ठीक है मिसेस माँ, हमें ये नहीं बताना है कि मुझे 17 के पीछे जाना है, 18 के पीछे जाना है वहां पे। और हमें ये भी नहीं बताना है कि एग्जैगरेट कर देना है कि मैं तो वतन अजीज के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो दिन रात वहां पे हूँ। वो एग्जैगरेशन के जिम्मे में आएगी। लेकिन रेशनैलिटी बेसिस पे रेशनल आंसर जरूर होना चाहिए। ठीक है जी। ओके ओके सो यहाँ तक था। आपके जो एंड वाले आंसर्स थे वो नॉन कन्विंसिंग इसलिए लिखा कि जो आंसर था वो आपने पहले दे दिया था, और बाद में डिटेल्स जो थी वो एग्जैगरेशन की तरफ लेके जा रही थी। और जब आप डिटेल्स में चले जाते हो जो पैनल नहीं सुनना चाहता है, तो वो फिर आपके एक बैड इंप्रेशन होता है। सो दैट इज अबाउट योर इंटरव्यू विद दिस सर, स्कोर। मैंने पूछना था जी जी कि अगर मैं जी। उनको कहती हूँ कि मैं अच्छा राइटर प्रोड्यूस करना चाहती हूँ वगैरह वगैरह, फिर वो मेरे से स्ट्रेटजीज पूछेंगे कि कैसे प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने अच्छे नहीं होते, वो रटा बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो वो फिर मतलब कैसे मैं प्रोड्यूस करूंगी फर्स्ट ईयर सेकंड जी ईयर में, उसको जबकि हम हमारे पास टाइम हम बहुत उससे थोड़ा होता है। जी 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 ठीक है, हम इसे आंसर करने की कोशिश करते हैं मिस उज़मा। इसका जो आंसर है वो सबसे पहले ये होता है कि अब जो गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वो तब्दील इस तरह से हो गए हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अलावा कॉलेजेस के अंदर जो हैं वो बीएस क्लासेस होती हैं। ठीक है, जिनमें एक स्टूडेंट यस आपके सर। पास 4 साल तक के लिए होता है। ठीक है, दिस डोंट नीड टू वरी अबाउट। आप शायद अपने इन कमेंट्स को काफी दिल पे ले गए हैं। दिस रिलैक्स, दिस डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस मॉक सेशन। डेफिनेटली इनका मकसद ये होता है कि आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आया जा सके। उन तमाम चीजों को हम यहाँ पे बेहतर कर लें जो हमें फाइनल हमारे इंटरव्यू में जो है वो डिस्टर्ब कर सके। तो इन पे तो हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए कि अभी हमें प्रॉब्लम्स का पता चल गया और हम इन पे वर्क करेंगे, इनको बेहतर करेंगे। अगर हम यहाँ पे चीजें नहीं बताएंगे तो आई थिंक वी आर नॉट डूइंग जस्टिस विद विद द नो सर, कॉज। नो सर, ये मसला आई नहीं है। थिंक एक्चुअली मैंने एक बार इंटरव्यू एक दिया था, तो मेरा भाई है आर्मी में, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया था कि झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सही सही बताना है। उनको भी समझ आती है कि भाई आप स्केल लेना चाह रहे हैं, जॉब जॉब लेना चाह रहे हैं। जब आप इस तरह की ऊंची ऊंची ये बातें करेंगे तो फिर कुछ वो उनको समझ आ जाती है कि ये झूठ हम बोल ना रहे हैं। इनके हम ना मैं सोचना इनके लिए दो केसेस को कंसिडर कर लेते हैं एक्चुअली। मैं अब जिस सेशन को सम अप करूंगा मैं सिर्फ 2-3 मिनट्स में, बिकॉज आई हैव अनदर सेशन एट 7:30 PM। अगर आप डिटेल में इस पर बात करना चाहें तो हम इस पे डेफिनेटली ग्रुप में भी डिस्कस कर सकेंगे। लेकिन इन चीजों के लिए हमें कुछ चीजों में झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। ठीक है, कुछ चीजों में हमें बिल्कुल नहीं झूठ बोलना है। और वो चीजें ये हैं कि जिससे साफ पता चलता है कि क्या झूठ है। मिसाल के तौर पर हमारे अक्सर एक्सपीरियंस से एक सवाल ये पूछा जाता है कि वाई एम ए इंग्लिश, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसकी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जस्टिफिकेशन दी। मिसाल के तौर पर एक इंजीनियर है, 2020 में जो है उनकी सिलेक्शन हुई। तुराब है माशाल्लाह से, हमारे स्टूडेंट हैं। आप फेसबुक पे जाएंगे उनके आपको कमेंट्स भी लिखे मिल जाएंगे। 28 नंबर पे जो है वो 2020 में उनकी सिलेक्शन थी। उनसे जब पूछा जाता है कि आप इंजीनियर हैं, यू ऑलरेडी देयर, आपने यूटी से ये किया, सो व्हाई यू आर देयर, आप क्यों जो है वो करना चाहते हैं। एक ये उनसे क्वेश्चन था। एक और जो हमारे स्टूडेंट थे वो भी यूटी से, उन्होंने भी इंजीनियरिंग की हुई थी। ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये उनसे एसोसिएटेड है। ठीक है, उन्होंने इसका आंसर ये दिया कि व्हेन आई वाज मैरिड, तो मेरी जो मिसेस है उनको डॉरी में कुछ बुक्स जो है वो मिली, और उनमें जो है वो एक बुक ये शामिल थी जिसने मुझे लिटरेचर की तरफ बड़ा अट्रैक्ट किया, और उसके बाद मैं इधर आ गया। तो तब से ऑनवर्ड्स आई एम इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। अब ये एक ऐसा झूठ था जिसने इंटरव्यू की डायरेक्शन तब्दील कर दी। मैं ये नहीं आपसे कहता कि आप बिल्कुल वहां पे, लेकिन आपको स्मार्ट प्ले जरूर करना पड़ेगा।
आपको if you just want, if you're just going to mention scale orientation, so the society is not going to give you anything. Okay, so you need to work smart way. Okay, just give me a moment. Okay. So no worries. So okay, I think that's I'm back now. So these are the comments. Smartly play करें, वरना ऐसे ऐसे interviews भी हमने देखे, all the participants are here, तो जिनमें लोगों ने 5-5 इंग्लिश की किताबें राइटर्स हैं उन्होंने लिखी हुई हैं, बड़े बड़े थीसिस हैं, बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स हैं, वो लेके गए हैं कमरे में, बट उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, और वो उन्हें तब लगा कि उनका इंटरव्यू अच्छा था, लेकिन जब रिजल्ट हुआ तो दे वर नॉट देयर इन द लिस्ट. देखिए मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, एंड दैट इज लर्न हाउ यू आर गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू, आप हाउ यू आर गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड इन योर इंटरव्यू. इंटरव्यू देना नहीं है, चलाना सीखे. जब आपने इंटरव्यू देने से चलाने की स्ट्रेटेजी पे आ जाते हो ना, देन यू आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर इन वेल मैनर्स. कल हमारा एक इंटरव्यू हुआ था मिस अरूबा के साथ, जो है वो आप सबने सुना होगा. मिस अरूबा ने अपने इंटरव्यू को बड़े ढंग से जो है वो उन्होंने लेकर चले थे. कुछ और भी हमारे मिस आयशा का इंटरव्यू था, मिस आयशा अभी हमारे साथ भी हैं, इन्होंने अपने इंटरव्यू को लेकर चले थे. प्रॉब्लम्स ये होती हैं जब आप अपने इंटरव्यू को लेकर नहीं चलते हो. आपने जब भी कोई बात करनी है, जब भी कोई डिस्कशन, आपने कोई आंसर देना है, उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन छोड़ना है, आपको उसके अंदर एक लूप छोड़ना है, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट छोड़ना है कि जो पैनलिस्ट को इंट्रीग करे कि इसमें से जो है वो फर्दर क्वेश्चन पूछना है. अगर आप इस स्किल को नहीं समझ पाते हो तो फिर काफी मुश्किल होगा. ठीक है जी. Okay, sir. Okay. So thank you so much, Ms. Uzma, and all of you for attending the session. Allah Taala की ज़ात आप सबके आमीन नासिर हो. So hope to see all of you, इंशाल्लाह. जी Ms. Uzma, आपका एक और क्वेश्चन है, प्लीज गो ऑन, अपना आप माइक ओपन कर लीजिए. आपने पॉजिटिव पॉइंट्स बताए ही नहीं और मार्क्स भी नहीं बताए. Okay, all right. Ms. Uzma, I'm sorry that is against the policy, but फिर भी मैंने मार्क्स आपको जो हैं वो भेज दिए हैं आपके चैट बॉक्स में. आप चाहें तो आप इन्हें ग्रुप में सबके साथ शेयर कर सकते हैं. और पॉजिटिविटी ये है कि आपने ओवरऑल अच्छे से फेस किया सारी की सारी चीज़ों को, और कंसर्न चाहे वो रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस इंटरव्यू के साथ हमें बेहतर इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए. नेक्स्ट टाइम जब हम जो है वो प्रोसीड फर्दर करेंगे तो अच्छे इंटरव्यू की तरफ इंशाल्लाह चलेंगे. अभी के मार्क्स जो है वो मैंने आपको भेज दी, आई एम श्योर आपको मिल गए होंगे. Okay. ठीक है. Thank you so So much. we are going to proceed further inshallah next time with positive hope. So ख्याल रखिए अपना जी everyone. Take care. खुदा हाफिज.